Welcome students to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia and this is our post-independence history part. पिछले वीडियो में हमने बात की थी लैंग्वेज इशू की। उसके बाद जो एक बड़ा चैलेंज आया इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन की अगर हम बात करें तो वो था ट्राइबल इंटीग्रेशन। अगर हम ट्राइबल इंटीग्रेशन को या ट्राइबल हिस्ट्री को समझें तो 18th और 19th सेंचुरी में रादर बहुत सारे ऐसे रिवोल्ट्स हुए जो कि ट्राइबल्स ने लीड किए, चाहे आप कोल, संथाल, भील, इन सारे इस तरीके के रिवोल्ट्स को देखें। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने, जो ब्रिटिश एम्पायर था या जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने हमेशा ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट किया, especially for the resources, and they were neglected largely. Apart from that, if we see the social integration of the tribals, the role of Christian missionaries are always questionable in that sense, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में, या आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ वाले रीजन में, झारखंड वाले रीजन में, there are a lot of Christian missionaries who are working there in the tribal regions, and most of the times they are being criticized for the conversion and the spread of Christianity or so on. So पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर हम बात करें तो ट्राइबल्स का किस तरीके से इंटीग्रेट हुआ, कैसे उनको, जो कि जिनके पास एक हिस्ट्री थी इग्नोरेंस की, एक्सप्लॉयटेशन की, नेग्लिजेंस की, उनको कैसे हमने हमारी पॉलिसीज ने एंड हाउ द वेरियस थ्रू वेरियस एक्ट्स एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कैसे हमने उनको इनकॉर्पोरेट किया, उनको इंटीग्रेट किया इंडिया के अंदर। इंटीग्रेशन मतलब, यहाँ इंटीग्रेशन का मतलब सिर्फ जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन नहीं है। इंटीग्रेशन का मतलब हम देखेंगे कि किस तरीके से उनको वो जो एक सेंस ऑफ इक्वालिटी है वो किस तरीके से उनके अंदर इनकलकेट किया गया। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस, एंड विल ट्राई टू कवर टिल 2013 वेरियस कमिटीज एंड कमीशंस जो कि ट्राइबल्स के उसमें बने। So let us begin this. This is about me. Those who are getting it for the first time, this is for you. This is my academic qualifications and working experience. Let us begin this. So in this lecture, what we are going to talk about, we are going to talk about tribal integration. नाउ अगर आप 1971 का सेंसस देखें इन जनरल, जो काफ़ी सालों तक एक लैंडमार्क बना रहा फॉर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड एवरीथिंग, वहाँ हमें ये पता चलता है कि देयर वर अराउंड 400 प्लस tribes amounting to about 7% of population. अब इतनी ज़्यादा ट्राइब्स अगर हैं, हर किसी का अपना एक, अगर आप देखोगे कि उनका नेचर जो होता है या जो उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है ट्राइब्स का, दैट इज मोर एक आइसोलेशन है, एक अटैचमेंट विद द लैंड है, दे हैव डिफरेंट ट्रेडिशंस, दे हैव डिफरेंट कल्चर्स, so there were various actually issues, the post, what we call as in the post independent India, that is post independence ट्राइबल इंटीग्रेशन इश्यूज, पोस्ट इंडिपेंडेंस ट्राइबल इंटीग्रेशन इश्यूज। सबसे पहला जो इशू था जिसको एड्रेस करना था यहाँ पे, एंड इट वाज द डाइवर्स ड्वेलिंग कंडीशंस। यहाँ पे डाइवर्स ड्वेलिंग कंडीशन का मतलब ये है कि ये जो 400 से ज़्यादा ट्राइब्स थी, इनका एक अपना वे ऑफ लाइफ था,
उन हर किसी के अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन। सो इशू ये था कि इनको किस तरीके से ये 400 या जो भी एन नंबर ऑफ ट्राइब्स हैं, जो हर जिसमें बहुत ज्यादा हेट्रोजेनिटी थी। द इशू हियर वाज हेट्रोजेनिटी, क्योंकि हर कोई अपने आप में अलग था और पॉलिसी जो है वो इन जनरल होमोजेनस होती है। ठीक है, किस तरीके से सवाल और जो या जो चैलेंज था वो यही था कि कैसे इस हेट्रोजेनिटी को एक होमोजेनस पॉलिसी से टैकल किया जाएगा, कैसे उन चीजों को एड्रेस किया जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, दे हैव वेरिड लैंग्वेजेस, दे हैव वेरिड लैंग्वेजेस। हर किसी की अपनी जबान अलग थी। अब ये एक दूसरा इशू था, क्योंकि ऑलरेडी हम लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज इशू से बहुत ज़्यादा मतलब they have created a huge issues in that. Then it was spread out throughout India. आप चाहे कश्मीर का रीजन देख लो, हिमाचल में, उत्तराखंड में, या आप इधर आओगे तो दार्जिलिंग से लेके पूरा नॉर्थ ईस्ट, मैनी ऑफ द हिली ट्रैक्ट्स इन द वेस्टर्न घाट्स, वहाँ पे भी आपको ट्राइब्स मिलते हैं। राजस्थान, is a there are various tribes which are living in that region, so that they are very spread out throughout country. ये वैसा कुछ इशू नहीं था कि ठीक है, दिस इज समथिंग व्हिच इज जियोग्राफिकली लिमिटेड और हम जो है उसको वहाँ पे उस तरीके से ट्रीट कर लेंगे। So this was another challenge, that it was spread out throughout the India. And the most another important issue was that this हिल एंड फॉरेस्ट, क्योंकि ये ज्यादातर हिल और हिली रीजन, जो हिली ट्रैक्ट्स हैं, माउंटेनियस रीजन हैं, फॉरेस्ट हैं, ये वहां रह रहे थे। सो द बिगर चैलेंज, सबसे पहले जो एक चैलेंज था यहाँ पे, वो ये था टू इंस्पायर देम विथ कॉन्फिडेंस। इंस्पायर देम विथ कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि एक ऐसा चाहे वो कोई सी भी ट्राइब हो, साउथ इंडिया की हो, नॉर्थ ईस्ट रीजन की हो, राजस्थान की हो, लार्जली हमने ये देखा था कि ब्रिटिश टाइम्स में उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उनके साथ उनका जो अटैचमेंट टू द नेचर था उसको एक्सप्लॉइट किया गया। देयर राइट्स वर नॉट बीन गिवन, एंड व्हेन इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री with features like democracy, equality, and feeling of fraternity. So the issue was that कि उनके अंदर भी वो confidence हो, उनके अंदर भी वो एक feeling of, वो जो हमने fraternity की बात हम preamble में करते हैं, वो भी उनको उनके अंदर उस चीज को भी हमें कल्टीवेट करना था कि नहीं, yes you belong to this country, yes you have a diverse culture, you have a diverse language, you have diverse traditions, but in spite of that you are Indian. So this feeling was to be cultivated. Second, an extension to this was to make them feel at one, to make them feel as Indians. Now here what does it mean? यहाँ तो पहली चीज ये है कि ठीक है, whether you are living in any part of this, you'll be treated as you are one. You should have this confidence in the system. You should have this confidence in the administration, that yes, they will not treat you the way you are being treated by the Britishers. उसके बाद okay, you may belong to a particular tribe, चाहे आप भील हो, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो नागा, आजादिया, गारो, खासी, जयंतिया, दीज आर ऑल ट्राइब्स। आप इस तरफ आओगे राजस्थान में तो मीना, तो ये आपकी आइडेंटिटी है। लेकिन अब क्योंकि आप एक आज़ाद मुल्क का हिस्सा हैं जहाँ इक्वालिटी की बात होती है, तो नाउ यू आर
You have to feel, we have to make them feel that yes, you are an Indian now. Then the third thing, the point of equality, that to make them feel the sense of equality, to make them feel the sense of equality. एंड देयर वर टू मेजर चैलेंजेस. ये तो था, ये तो एक कहना चाहिए एक इमोशनल इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें, हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी इमोशनल इंटीग्रेशन की. सो दिस इज समथिंग where we talk about emotional integration, but they were because policy matter सिर्फ emotional integration से नहीं चलेगा. We had 2 points which we have to, the policymaker had 2 points when we talk about two challenges when we talk about tribal integration. Number one, tribal areas have to progress. Second, their progress should be in their own way. Their progress should be in their own way. First of all, तो यहाँ यहाँ हमारे पास क्या था और ये दोनों चीजें कैसे होती, ये ऐसे होती ना दैट ट्राइबल्स शुड डेवलप in their own way. The tribals should develop in their own way, or rather they should develop on their own lines. हमें उनके डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे तो हमें कोई नई चीज, कोई एलियन या कोई फॉरेन एलिमेंट उसमें इंक्लूड नहीं करना है, हमें उन्हें डेवलप तो करना है लेकिन ऑन द पाथ विच वे आर ऑलरेडी there. We have always seen that these tribals have a close association with the land and forest, and they have अगर टेक्निकली देखा जाए तो जो ट्राइब्स हैं, जो जनजातियां हैं जो जंगलों में या पहाड़ों में रह रही हैं, तो उस जंगल पे, उस पहाड़ पे अगर पहला हक किसी का है तो वो उस ट्राइब का है. सो द ट्राइबल राइट्स ऑन लैंड एंड फॉरेस्ट शुड बी रिस्पेक्टेड. The tribal rights on land and forest should be respected. Then जैसा हमने कहा initially कि they have varied languages, so to encourage ट्राइबल लैंग्वेजेस, क्योंकि देखो डेवलपमेंट का मतलब इम्पोजिशन नहीं होता है. अगर आप कहेंगे जैसे टू बी ऑनेस्ट आई एम very much not in favor of online education, at least at school level. ये हम जिस लेवल पे हैं वो एक मैटर ऑफ चॉइस है. यू कांट मेक इट कंपल्सरी, स्पेशली ठीक है कोविड है, पैंडेमिक टाइम्स है, वी हैव टू डिवाइस नो वी ऑल हैव दिस इंफ्रास्ट्रक्चर कि हम ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं. जस्ट इमेजिन व्हाट इफ देयर वाज नो ऑनलाइन एजुकेशन, how you would have given education to the school children, because when you talk about school children, these tribal children are also the part of that. ये भी स्कूल जाते हैं, इनके पास भी लेकिन इनके पास शायद वो टेक्निकल रिसोर्सेज नहीं है जो एक अर्बन एरिया में स्टूडेंट के पास होते हैं, और वो भी सबके पास नहीं होते. इट इज समथिंग विच इज हैविंग हेवीली फाइनेंशियल डिपेंडेंसी. आई हैव सीन इन लॉकडाउन मैनी केसेस जहाँ पे एक गरीब किसान है, उसने किसी, आई हर्ड दैट केस दैट a farmer actually had to sold out his bullocks so that he could have purchased a smartphone for his child and they can have schooling in that. तो डेवलपमेंट में ये इम्पोजिशन जब आने लगता है ना तो वो एक अलग रास्ता ले लेता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम स्कूल लेवल पे हमेशा इस पैंडेमिक से पहले आई थिंक स्कूल्स में चेकिंग होती थी दैट समवन हैज नॉट ब्रॉट मोबाइल, और आज उसी चीज़ों पे सारी चीज़ें मोबाइल एंड स्मार्टफोन्स एंड internet and everything is now, the schools are actually running on that. Okay, at this level, at higher education level, yes, we can say that ठीक है यहाँ पे ये
वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रिसोर्सेज अवेलेबल करा रही हैं, देयर आर वेरियस प्रोग्राम्स, and that population as compared to the schooling children, above all, uh, whether it's you or the students anywhere in the country who are actually जो सीख रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन, हायर एजुकेशन पे है, they have that sense of rationality that how to use it. They have that rationality कि इसका justified use क्या होगा, वो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जब हम ट्राइबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम उस लाइन पे जाने की बात करते हैं, दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल फ्रॉम द रीसेंट टाइम्स, तो हम डेवलपमेंट के नाम पे इम्पोजिशन ना करें, चाहे वो लैंग्वेज के पे हो, चाहे वो कल्चरल डेवलपमेंट पे हो, या फॉरेस्ट राइट्स पे हो. सो दे शुड बी लेफ्ट to their own, but they should also be brought to the mainstream. In this, हम administration की अगर बात करें, the tribal people should administer themselves. The tribals should administer themselves, and and in the name of administration, there should be no over administration. There should be no over administration. Means ये ना हो कि एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे जो है उन पे बहुत सारे ऐसे चीजें कर दी जाएं जो कि शायद that may not be in accordance with the customs and the traditions of those tribals. So these were the challenges, major challenges of our tribal integration at the point of in the post-independent India. Now there is a certain political and administrative history of ट्राइबल्स इंटीग्रेशन. चाहे आप हमेशा से ट्राइबल एरिया को प्रोटेक्ट, ऐसा नहीं कि अंग्रेजों ने सिर्फ एक्सप्लॉइट किया. जैसे 1873 में इनर लाइन रेगुलेशन आया, फाइन. जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो शेड्यूल्ड ट्राइब को डिफाइन करना, आर्टिकल 342, the fifth and the sixth schedule, and so on. So ये सारे constitutional provisions. There are actually various articles, which are related to this tribal region. But ऐसा नहीं था. There were certain committees and commissions that were also formulated in the post-independent India. Like in 1959, there was a committee known as Elwyn Committee. So Elwyn Committee, it was it was formulated to make to suggest administrative reforms, especially in the tribal regions, and they came up with multi-purpose development blocks. कि जिन एरिया में या जिन ब्लॉक्स में, not even the whole district, let's say one district is a tribal district, but in that also there must be some blocks which are actually having higher population of tribes. So this was उनके multi-purpose क्यों, क्योंकि उनको सिर्फ एक administrative block नहीं, उनको multi-purpose block माना गया. Then in 1960, another committee was set up, which was known as the UN Haber Committee. And this committee was about the land alienation of tribal areas. Fine. Then in 1965, Lokur Committee was formulated. And this was important. Why this was important?
क्योंकि इनको बड़ा फंडामेंटल काम दिया गया था. The job that the committee was formed in order to defining scheduled tribes. This was done in order, with the purpose to define scheduled tribes. Now, what they did, they came up with the idea कि किसी भी tribe को scheduled tribes की definition में आने के लिए there are 5 important parameters जिन पे किसी भी tribe को देखा जाएगा और फिर define किया जाएगा कि फिर decide किया जाएगा that whether they are this scheduled tribe, whether they can fall under the definition of scheduled tribe or not. Number 1 was primitive traits. Number 2 was distinct culture. Number 3, geographical isolation. Number 4 was backwardness. And number 5th, which was a unique thing, and that was shyness of contact. शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट से हमें ये एक्चुअली सेंस ये है कि कई ऐसे ट्राइब्स हैं विच आर वेरी मच रिलक्टेंट टू एक्चुअली मीट विथ द मेन स्ट्रीम population. They don't want to combine with the mainstream population, so the shyness was also kept as a parameter by the local committee in order to define this scheduled tribes. Then in 1991 there was another committee, there was a new committee, and which was very important actually in itself. It was in 1991 this was constituted, and this was known as the Bhuria Committee. There were two. This was in 1991, and on the recommendation of this committee, the recommendations of this committee led to the PISA Act. PISA Act, that is provisions of Panchayat Extension to Scheduled Areas Act. सो जो क्योंकि 1991 में 73rd अमेंडमेंट से पंचायती राज जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, एंड लेटर ऑन this was extended to this scheduled areas which are defined in schedule 5th and schedule 6th. Then 2002 में again this Bhuria committee was constituted, and this time they actually came up with a wide recommendations were on the wide range of issues such as the 5th schedule, the PISA, that is extension to Panchayat, extension to Scheduled Areas Act, tribal women की यहाँ बात हुई. And then in 2006 there was a commission which was known as the Bandyopadhyay Committee. And this committee was on the development and governance in the left wing extremism, commonly known as नक्सलिज्म. सो वो ट्राइबल एरियाज जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से या नक्सलिज्म से इफेक्टेड है, वहाँ के डेवलपमेंट और गवर्नेंस के लिए ये कमीशन बना था to obviously give recommendation on this. And then in 2013 there was a commission known as the Khaka Commission,
or the Khaka committee, I'm sorry. And actually, again, they have a wide range. It was again to review the overall status of the tribal, population in India, and they have come up with recommendations on livelihood and employment, education, health, involuntary displacement and migration, legal and constitutional, matters, legal and constitutional matters. Then they have talked about migration and displacement. So there was like, this is a whole timeline of various commissions and committees which were formulated, which were constituted to you know tackle this tribal issues. So since इंडिपेंडेंस टाइम ये सारी चीज़ें जो हैं, हमने पहले एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, फिर लैंड एलिनेशन की बात की ट्राइबल एरिया में, फिर हमने कोशिश की कि वी शुड रीडिफाइन द टर्म शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एंड नो डाउट बहुत ज़्यादा काम हुआ है ट्राइबल एरियाज में सिंस इंडिपेंडेंस, लेकिन बावजूद इसके अगर आप ओवरऑल स्टेटस देखें ऑफ दिस ट्राइबल, या जो ट्राइबल एरिया के डेवलपमेंट की अगर आप बात करें, या हम constitutional safeguards की बात करें, there are various steps apart from this which have been taken by various states and center and everyone. The overall progress in the tribal area is very slow. So here we will be talking about the causes of slower, or deferred, I will use the word deferred, development in tribal region. क्योंकि इंटीग्रेशन अपनी जगह है, ट्राइबल इंटीग्रेशन, ट्राइबल कंसोलिडेशन अपनी जगह है. सो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो जिनकी वजह से, या जो बार बार इमर्ज होते हैं स्पेशली इन द ट्राइबल रीजन, और ये उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा हर्डल है. और अनफॉर्चुनेटली सबसे पहला जो है, जो बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं सिंस इंडिपेंडेंस, ऐसा नहीं आज, दैट वाज मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स. Misappropriation of funds means, in general, I think the former Prime Minister Rajiv Gandhi said once that अगर दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो ट्राइबल एरिया में पहुंचते पहुंचते 10 पैसे बचता है. तो ये एक करप्शन जो है एक बहुत बड़ा इशू था. दूसरी चीज, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड एरिया है, देखिए ये स्पेशलाइज्ड लोग हैं, ये नॉर्मल population की तरह नहीं है. They have certain which is, I'm not saying that they are abnormal, but yes, they are having certain distinction. And whenever you have to deal with distinction, whenever you have to deal with differentiation, you need well trained people, you need well trained personnel. But unfortunately, हमारे कंट्री में जो हमने एक ट्रेंड देखा, that ill trained personnel. And even then, if I give a broader dimension to this, they are the officers, or the machinery, or the administrative people who are working for the development of this tribal region or the tribal people. They had certain prejudices against the tribals. And they have certain prejudices against the tribals. Then सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस कंट्री का, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी कहना चाहिए ऐसी क्लास हो जिसने हमेशा एक्सप्लॉयटेशन झेला, और उसकी सबसे बड़ी वजह है ये एक्सप्लॉयटेशन बाय मिडलमैन. वो उनसे, इफ यू विल सी, if I talk personally, my in my childhood days, my father was posted in the Bastar region of Chhattisgarh, and
वहाँ पे मतलब वो जो ट्राइबल लोग थे उनका एक अलग ही आर्ट था, द टेराकोटा आर्ट दैट यूज्ड टू हैव। उनका एक अलग क्राफ्ट्स जो था, या जो वो मतलब पत्तों के जो यूटेंसिल्स बनाते थे या जो बांस का काम करते थे, दैट वाज वेरी यूनिक। एंड ऑनेस्टली वी ऑब्वियसली मतलब तब तो रियलाइज नहीं हुआ कि क्योंकि वो ट्राइबल लोग आते थे, मतलब दे यूज टू चार्ज मिनिमम, कुछ जो पैसे दे दो, वो कभी प्राइस बताते भी नहीं थे, आपको जो लगता था उनकी वैल्यूएशन आप अपनी मर्जी से करिए और दे दीजिए। बट व्हेन आई केम टू जब कई सालों बाद जब देखा वही टेराकोटा आर्ट जो शायद वो मिट्टी के खिलौने बनाते थे और हाथी और इस तरीके की चीजें, और जब वो द सो कॉल्ड मॉल कल्चर में जब वो बिकने लगे, तो जो हम आई स्टिल रिमेम्बर वी यूज्ड टू गिव लाइक 10 रुपीज 20 रुपीज वे बैक, और वही आज 3,000 4,000 इन द नेम ऑफ इट इज फ्रॉम दैट रीजन। और वो जो एक कैपिटलिस्ट टैग्स जो लगते हैं ना, उसके बाद वो थाउजेंड्स रुपीज का हो जाता है वही चीज। और आज भी ऐसा नहीं है कि वो वहां जाके वो आज वहां 50 या 100 रुपए का मिल जाएगा अगर आप जाओगे तो। होता क्या है, वो जो मिडिल मैन होता है वो उनसे बल्क में खरीदता है, और वो ये बड़े फर्म्स को, बड़ी बिग बिजनेस हाउसेस को, आर्ट हाउसेस सो कॉल्ड, उनको सेल आउट कर देते हैं एंड दे यूज टू अर्न अ लॉट। सो ये जो मिडिल मैन का एक्सप्लॉइटेशन है ये हमेशा से रहा है। और अनफॉर्चुनेटली ट्राइबल आर्ट को, ट्राइबल कल्चर और ट्राइबल क्राफ्ट्समैनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी भी ऐसा कुछ नहीं आया यू नो जो उनको मतलब उनको उनकी काम की विच इज वेरी गुड, द पॉटर्स, एवरीवन दैट्स रियली गुड, उनको कभी उनकी सही वैल्यू नहीं मिली। एंड द मेजर रीजन वाज दिस एक्सप्लॉइटेशन बाय द मिडिल मैन। देन आउटसाइडर्स, एक एक इशू, ये तो एक्सटर्नल हुआ, एक इंटरनल इशू भी है जो ट्राइबल रीजन में बहुत ज्यादा देखने में आता है, एंड दैट इज आउटसाइडर्स आर नॉट वेलकम्ड। ना इसके दोनों एस्पेक्ट हो सकते हैं। एक वो मिक्सअप, कोई कहेगा कि सर वो मिक्सअप नहीं होना चाहता है। एक एस्पेक्ट ये भी है कि हाँ, उन्होंने जिस हिसाब का एक्सप्लॉइटेशन, दे हैड दैट हिस्ट्री ऑफ exploitation, especially since British times, and even today you will find that they are not very much comfortable with the uh, the outsiders, the non-tribals, or the people who are coming to them. So this is another aspect to this. Then difficult topography. अब हमने देखा कि जो ट्राइबल्स हैं वो बहुत ज्यादा हिली रीजन और फॉरेस्ट रीजन में, और इस तरफ उनका जो ड्वेलिंग है वो वहां होता है, हैबिटेट वहां होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीच. So sometimes, even when the officers have a good intent, even when the government is having a good policy, even after that, the the topography doesn't allow the things to reach well within time and well within वो जो पहुंचना चाहिए, या जो रिसोर्सेज या जो एड उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है. Then another issue is and it is actually uh, an outcome of it may be a cause, and you can call it the cause, or it is the outcome, and that is severe economic and educational backwardness. आप कहोगे सर एजुकेशन में तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिफाइंड हैं एंड they have got all their reservations, but if you will observe that there are only few tribes in the country like मीनाज are there, नेगीज are there, जिन्होंने इस चीज का बेनिफिट अच्छे से उठाया, लेकिन 400 प्लस ट्राइब्स हैं, वो उसका बेनिफिट उतना ज्यादा नहीं ले पाए, या वो चीज जो है एक्चुअली ट्राइबल रीजन में क्या होता है ना, जो पेनिट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है वो स्लो है. पीपल आर नॉट रेडी देयर टू वेलकम द न्यू टेक्नोलॉजी, they are not ready to welcome actually new people, leave technology. So this is another thing.
they have that fear that education may destroy their culture. Western education or modern education may destroy their culture, so they have various prejudices in themselves only. And that is why initially जो हमने बात की थी यहाँ पे कि दे शुड बी डेवलप्ड इन देयर ओन वे, सो हमने अगेन करना तो ये नहीं था कि जो जो हम यूज कर रहे हैं, जो 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 पॉलिसी मॉडल अर्बन एरियाज के लिए, रूरल एरियाज के लिए यूज हो रहा है, वही एज इट इज इम्पोज कर दिया जाए ट्राइबल रीजन्स में। हमको उसमें कुछ ना कुछ एड ऑन देना था, बट अनफॉर्चुनेटली ये रीजंस थे कि वो नहीं पहुंच पाया। और जो पहुंचा भी वो उसका उसका हमने एक चेंज ऑफ फॉर्म नहीं किया। सो दिस इज अनदर रीजन फॉर द बैकवर्डनेस और द लैक ऑफ डेवलपमेंट or lack of progress in the tribal welfare. So this is about the tribal consolidation and how the whole tribal integration, I'm sorry, and the whole process that country has done. So this is it for this. I'll see you in the next session where we'll be talking about some more events and issues of post-independent independent India. Uh, Till then, have a great time. Your main is approaching. Take good care of your health. Thank you so much.